Okay, now we'll continue with the creating relationship and how to create the query using the OpenOffice. Now I have already created the two tables, that is the employee table and subject teacher table. Now how to create the relationship between these two tables, employee ID and employee. For that purpose, I need to select the tool option and relationship. Now I will add both to the table, that is the employee table. Click on the add subject teacher and click on the add option. Now close this dialog box and I need to create relationship between email ID, EID, that is the employee ID and the subject teacher, because employee ID is a master table for me which save the subject teacher's name. Just drag and drop I have to use. Just drag and drop. So the employee table EID will be the master and this is the subject teacher. Now I will close the relationship and save the relationship. Now I will create the query. Now I will create the query using the design view, which will give me the name of my subject teacher instead of I have whatever the added number. So for that purpose, I need to again add to both the table, that is the employee table and subject teacher table. Close the dialog box, select the ID from subject teacher and subject table. Select subject name from the subject table, subject teacher table. Now, after that, my field is subject teacher name, but I have write the code, employee ID code, that is a 123 I have entered. तो अगर मुझे उसने उसकी जगह यहाँ पे जो सब्जेक्ट टीचर में 123 लिखा था उसकी जगह यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में जो नेम है वो डिस्प्ले करना है, तो आई विल सिलेक्ट द फील्ड नेम from the employee table and select the table employee. Now what will happen, यहाँ पे id subject और उसकी id की जगह मुझे यहाँ पे subject teacher के नेम लिखे हुए दिखे मिलेंगे. So for that purpose I need to run the query. यहाँ पे run query का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगी. ओके, सो यू कैन फाइंड कि यहाँ पे अब मेरा एम्प्लॉय आईडी सब्जेक्ट और यहाँ पे मेरा नेम रन हो रहा है. एम्प्लॉय आईडी के साथ मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया था, इसलिए दोनों रिलेशन में आ गए. नाउ आई विल सेव द क्वेरी. अब मैं इसको क्लोज करूंगी. इट विल आस्क मी टू सेव द चेंजेस. आई विल क्लिक ऑन द यस ऑप्शन एंड सेव द क्वेरी एज अ सब्जेक्ट टीचर्स नेम करके करते हैं, टीचर्स नेम ऐसा करके ये क्वेरी मैंने सेव कर दी है. ओके, कोट्स नहीं यूज कर सकती, टीचर्स टीचर नेम, ठीक है. ओके, नाउ माय क्वेरी इज आल्सो सेव्ड. नाउ I would like to create the form and reports. For form I will create select the wizard, create form using wizard ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है. ओके, यहाँ पे इट विल आस्क मी फॉर द टेबल और क्वेरी. मुझे यहाँ पे क्वेरी पे बनाना है, सो आई विल सिलेक्ट द क्वेरी एंड ऑल द fields I will select. Click on the next option. It will ask me for the subform. I do not need a subform, so move for the look of this particular form. मुझे उसका पीछे प्रीव्यू दिख रहा है, so whatever the option I would like to select I can select. Okay, I will select the first option. Then next it will ask me for the displaying all the data or editing. Yes. Now apply style, that will set the background color, ठीक है. Whatever the your choice color you can select. Now this is known as a field box. जो मेरे field के box है उसका डिजाइन यहाँ से चेंज होगा, ठीक है. I will select this one and click on the next option. It will ask me for the work with the form or modify the form. Right now I will save with the work with form. Finish. My form is created. Total 4 data entries I have done. That 4 data entry will be displayed up to. Now I need to create the report for the same. Click on the report database. Use wizard to create report.
It will ask me for the table. Again, I will select the query to create the and select all the fields. Now click on the next option. Here it's a alias. It means I can change the label, the field as per my requirement. जैसे subject की जगह मुझे कुछ और लिखना है, name की जगह टीचर का नेम लिखना है तो टीचर्स. अब मुझे एपोस्ट्रोफी वहां यूज नहीं करने दिया था, यहाँ पे यूज करने देंगे. फिर नेक्स्ट ऑप्शन, ग्रुपिंग करना है तो मुझे सब्जेक्ट वाइज करना है या नेम वाइज करना है या आईडी वाइज ग्रुपिंग करना है, तो मैं आईडी वाइज यहाँ पे ग्रुपिंग करूंगी. ठीक है. उसके बाद सॉर्ट, अगर मुझे कोई डेटा पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, देन आई डिड नॉट वांट राइट नाउ. नाउ नेक्स्ट, choose the layout, means the design. You can view the reflect backside. आपको प्रीव्यू पीछे दिखेगा, जो भी चेंजेस आपका होगा वो. ठीक है. यहाँ पे वी विल सिलेक्ट द एनी ऑफ अवर चॉइस. मैं एलिगेंट वाला सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे. एंड यहाँ पे लेआउट विल बी डिजाइन. जैसे ड्राफ्टिंग है, फाइनेंस, इट विल गिव मी द टाइटल एंड फॉर्मेशन ऑफ माय रिपोर्ट. आप पीछे देख सकते हो उसका प्रीव्यू चेंज हो रहा है कंट्रोलिंग में. फाइनेंस. ठीक है. इट विल गिव यू द कॉइन. नाउ ओके. Next, dynamic report या static. Right now I will create the dynamic report and create report now. Finish. Now my report is also will be get created. I have grouped it as per my ID. So ID will be on the top and rest of the option will be bifurcated below the ID. So this way we can create the form and report using the database. In form we have much more options to do, but for right now it's okay. Thank you. Wish you all the best.